Hello guys, welcome to all information for visually impaired my official YouTube channel। यहाँ आप सभी को मिलती हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ ज्ञानवर्धक टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। गाइस, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल अभी शनिवार को धनतेरस का त्यौहार गया है और आज आ चुकी है छोटी दीपावली। जी हाँ दोस्तों, आज छोटी दीपावली के साथ साथ हनुमान जयंती भी है। तो आप सभी को इन पावन जो भी त्यौहार आ रहे हैं उनकी ढेरों शुभकामनाएं। आपके एवं आपके परिवार को माँ लक्ष्मी सदैव आपका कल्याण करे और आपको धन धान्य से भरपूर करें। ठीक है, तो ऐसी मैं शुभकामनाएं आप सभी के लिए करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल पढ़ के तो खैर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस पे होने वाला है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसबीआई की तरफ से कुछ वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे निकाल दी गई हैं। वैकेंसीज निकाली गई हैं कौन सी? सर्कल बेस्ड ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, सर्कल एसबीओ। ठीक है, इसको एसबीओ बोलते हैं शॉर्ट में, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, ये सर्कल वाइज जो वैकेंसीज है दोस्तों वो आई हुई हैं। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा कि कौन से रीजन में, कौन से सर्कल में कितनी कितनी वैकेंसीज विजुअली इम्पेयर्ड के लिए रिजर्व की गई हैं और उसके अलावा रेगुलर वैकेंसीज कितनी हैं, बैकलॉग वैकेंसीज कितनी हैं, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब से स्टार्ट हुई है, इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इस फॉर्म में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए फीस कितनी रखी गई है और उसके अलावा इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा और इसमें कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, तमाम जानकारी आज की वीडियो में दी गई है। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या कोई अन्य जो जानकारी है जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से रिलेटेड है, अगर आप हमेशा पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पास में जो बेल आइकन दिया होता है उसको ऑल पे जरूर सेट करें ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए भरपूर अपडेट से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं और अभी तक भी आपने अपनी तरफ से लाइक नहीं किया है तो हमारे कहने से इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है और अगर आप लाइक करेंगे और हम मोटिवेट होंगे और इसी तरह से इन फ्यूचर वीडियोस हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक छोटी सी बात बता दूं उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है 23 अक्टूबर हो चुका है। ठीक है, लेकिन कल 22 अक्टूबर को दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक डिजिटल ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर रिक्रूटमेंट प्रोग्राम रखा गया था रोजगार मेले के तहत। तो उसमें दोस्तों हमारा जो सिलेक्शन ईएसआईसी के थ्रू हुआ है तो हमें भी दोस्तों वहाँ पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है मेल के थ्रू। ठीक है, तो आप में से किन किन लोगों को मिला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे ये बताइएगा क्या ईएसआईसी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके आगे के प्रोसेस के लिए, क्या उस पर आप वीडियो चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ना एसबीओ है ना, यानी एसबीआई का ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर। दोस्तों इसमें दोस्तों 2 साल का आपका पीओ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि चाहे आपने आरआरबी पीओ ज्वाइन कर रखा हो या फिर एसबीआई पीओ ज्वाइन किया हो, आईबीपीएस पीओ ज्वाइन किया हो, बट आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आपको पीओ ज्वाइन करे
2 साल हो जाने चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं आप कहें फिर हमने बताया नहीं, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना है। तो कंटिन्यू करते हैं, चलिए हम रिक्रूटमेंट की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और राइटर और स्क्राइब गाइडलाइन इसमें क्या रखी गई है वो भी इसमें बताई गई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स सी। मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड। तो लेट्स सी, स्टार्ट नाउ। Hello everyone, welcome to Information for Visually Impaired YouTube channel. Today we will discuss about the recruitment of circle-based officers in State Bank of India. So first let us talk about the important dates for the same. So the online registration of application and payment of fees begins from 18 October 2022 till 7th November 2022. Download of call letter for online test will be in November or December 2022, which is tentative date. Then the online test will be on 4th December 2022, and this is also a tentative date. Eligible candidates are required to register online for the recruitment process, which will be held in phases. One will be online examination, then screening and an interview. Now let us discuss about the regular vacancies in various states and union territories. So in the circle of Bhopal, we have the state of Madhya Pradesh / Chhattisgarh, and for this we have 2 seats for visually impaired candidates. In the circle of Bhubaneswar, Odisha, and in the state of Odisha, we have 2 seats for VI candidates. In the circle of Hyderabad and in the state of Telangana, we have 2 seats for VI candidates. In the circle of Jaipur, we have the state of Rajasthan, and for this again we have 2 seats for VI candidates. In the circle of Kolkata, we have the states of West Bengal, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, and for this again we have 2 seats for VI candidates. Then again, in the circle of Maharashtra, we have the state of Maharashtra and Goa, and for this we again have 2 seats for VI candidates. And in the circle of Northeastern, we have the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. And for this we have 3 seats in total for VI candidates. So in total we have 15 seats for VI candidates in the regular vacancies category. Now coming to the backlog vacancies, for the circle of Jaipur, Rajasthan, we have 1 seat for VI candidates, and in the circle of Maharashtra, we have the state of Maharashtra and Goa, and for this again we have 1 seat for the VI candidates. Now let us talk about the age limit as on 30 September 2022. So the age limit is that the candidate must not be below 21 years and not above 30 years as on 30 September 2022. That is, candidates must have been born not later than 30 September 2021 and not earlier than 1 October 1992. Both days are inclusive. Now talking about the relaxation in upper age limit, the persons with benchmark disability category, in this we have the SC and ST. For this the age relaxation is 15 years, and then again for PWBD of the OBC category we have age relaxation of 13 years, and then PWBD of the general and EWS category the age relaxation is 10 years. Now let us discuss about the use of scribe and compensatory time for the candidates. So the facility of scribe would be allowed to a person who has disability of 40% or more if so desired by the person, and is meant for only those persons with disability who have physical limitations to write, including that of speed. In all such cases where a scribe is used, the following rules will apply. Number 1. Candidates who are eligible and wish to use the services of scribe in the examination should carefully indicate the same in the online application form. Number 2. Both the candidate and the scribe will have to give a suitable undertaking on the prescribed format at the time of online examination. Number 3. Such candidates who are eligible to use a scribe shall be eligible
for compensatory time of 20 minutes for every hour of the examination, whether availing the facility of scribe or not. Number 4. Candidate will have to arrange his or her own scribe at his or her own cost. Number 5. Any candidate who is not eligible to use scribe as per guidelines as referred above uses scribe in the online examination shall be disqualified to participate further in the process of recruitment. Number 6. Any candidate who is using scribe should ensure that he or she is eligible to use scribe in the examination as per the guidelines. Number 7. If it is found that scribe is solving the papers himself or herself independently, the candidature of the candidate is liable to be cancelled. Number 8. Any candidate using scribe in violation of the above guidelines shall stand disqualified and can be removed from the service without notice if already joined bank. And number 9. The scribe will be allowed to be used as per the guidelines issued via Office Memorandum F number 16-110/2003 DD3 dated February 26, 2013 of Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Disability Affairs, New Delhi, and clarification issued by Government of India, Ministry of Financial, Department of Financial Services, file letter number F number 3/2/2013, welfare dated 26 April 2013. Now let us talk about the selection procedure. So the selection process consists of online test, screening and interview. So the online test will consist of objective test for 120 marks and descriptive test of 50 marks. The descriptive test will be administered immediately after conclusion of the objective test, and candidates will have to type their descriptive test answers on the computer. Now, talking about the objective test, the duration of the test is 2 hours and it consists of 4 sections of total 120 marks, and there will be separate timing for every section. So the first section is English language and it has 30 questions with a maximum of 30 marks, for which 30 minutes will be given. For the second section, it's banking knowledge and it has 40 questions and a maximum of 40 marks, and a duration of 40 minutes will be given. Then the third section is general awareness/economy, and for this we have 30 questions and a maximum of 30 marks, and for this section 30 minutes will be allotted. And at last we have the section of computer aptitude, which will have 20 questions and a maximum of 20 marks, for which 20 minutes will be given to complete this section. Now, talking about the descriptive test, it will be of 30 minutes and it will be a test of English language, which will consist of letter writing and essay with 2 questions for total 50 marks. And there will be no penalty for wrong answers marked in objective test. Moreover, sectional marks will not be maintained for online examination. Then we have the next process of screening. So the online application and documents of candidates who are shortlisted based on performance in online examination will be placed before the screening committee. The candidates who fulfill the required experience as decided by the screening committee will be called for interview. The interview will consist of 50 marks and candidates will have to score minimum qualifying marks in interview to be considered for final selection. The minimum qualifying marks will be decided by the bank. The candidates will have to qualify both in online test and interview separately. The marks obtained in online test, both in the objective test and the descriptive test, will be added to the marks obtained in interview for preparing the final merit list. Final merit list would be prepared based on normalization of marks scored in online test and interview with weightage of 75 to 25 respectively. Now coming to application fees, so there are no application fee for the SC, ST and PWD candidates for this examination.
Now, at last, let us talk about the tentative list of examination centers at different states and union territories. So, in the Union Territory of Andaman and Nicobar, the online examination center will be at Port Blair. In Andhra Pradesh, the centers will be at Guntur, Kurnool, Vijayawada and Vishakhapatnam. In the state of Arunachal Pradesh, the online examination center will be at Naharlagun. In Assam, the center will be at Guwahati. In the state of Bihar, the centers are Arrah, Patna and Muzaffarpur. In the Union Territory of Chandigarh, the centers will be Chandigarh/Mohali. In Chhattisgarh, the center will be at Raipur. In the state of Goa, the online examination center will be at Panaji. In the state of Gujarat, the center will be at Ahmedabad/Gandhinagar. Then, in Haryana, the centers are Ambala, Hisar, Faridabad and Gurugram. In Himachal Pradesh, the centers will be at Shimla and Solan. In Jammu and Kashmir, the center will be at Jammu. In the state of Jharkhand, the centers are Jamshedpur and Ranchi. In the state of Karnataka, the center will be at Bangalore. In the state of Kerala, the centers are Kochi and Thiruvananthapuram. In the state of Madhya Pradesh, the centers are Bhopal and Indore. In the state of Maharashtra, we have the centers at Aurangabad, Nagpur, Pune, Mumbai/Thane/Navi Mumbai. In the state of Manipur, the center will be at Imphal. In the state of Meghalaya, the online examination center is at Shillong. In Mizoram, it's at Aizawl. In Nagaland, the center is at Kohima. In Delhi NCR, we have the online examination center at New Delhi. In the state of Orissa, the center will be at Bhubaneswar. And again in Puducherry, the center will be again at Puducherry. Then in the state of Punjab, the centers are Bhatinda, Jalandhar and Ludhiana. In the state of Rajasthan, the center will be at Jaipur. In Sikkim, the centers are Bardam-Gangtok. In Tamil Nadu, the centers are Chennai, Madurai and Tirunelveli. In Telangana, the center will be at Hyderabad. In the state of Tripura, the center will be at Agartala. In the state of Uttar Pradesh, the centers are Agra, Prayagraj, Ghaziabad, Noida/Greater Noida, Kanpur, Lucknow, Meerut and Varanasi. In the state of Uttarakhand, the center will be at Dehradun. And at last, in the state of West Bengal, the centers will be at Hooghly, Kalyani and Kolkata. So that's all for today. Have a great day.